Good afternoon everyone. First of all, a very happy Dashera to all of you. आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Today we'll take a recorded lecture for the weekly current affairs as it is a public holiday. So weekly current affairs for geography, environment, science and tech for the past 1 week, that is from September 29 to October 5, will be covered today. I welcome all of you. I'm Surbhi Sardana. Today is Wednesday and let's see what are the topics that we have for today. So you know this is the season for Nobel Prizes being awarded. Nobel Prizes हर साल 10th December को दिए जाते हैं और अक्टूबर में Nobel Prize winners अनाउंस कर दिए जाते हैं. In October every year Nobel Prize winners are announced. So Nobel Prize for Physiology and Medicine will be discussed today. The rest of the Nobel Prizes, they will be discussed next week in Wednesday Current Affairs when I'll see you again. The second topic is tiger relocation and the third one is Neela Kurunji flowers. So also this initiative runs in coordination with our website, that is rajisacademy.com. It also runs in coordination with our आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव, जिसमें आप रोज़ अपने आंसर्स भेजकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड आवर टीम विल इवैल्यूएट योर आंसर्स एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आपको मेंस की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं, जॉइन दिस इनिशिएटिव. द क्वेश्चन फॉर टुडे इज डिस्कस द रीजंस फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स इन इंडिया. Also suggest a way forward for the issue. Answer in 150 words. See, this is a very simple question. Human animal conflict has been in news for almost eternity. So बहुत ही simple question है, बहुत ही सीधा सा question है. So for practicing, if you're somebody who has not answered even a single question, this is the right question to start with. आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. Especially when Seize the Mains is premiered today at 9 PM, you'll understand कि question को कैसे answer करना है. Share your answers on the website at rajisacademy.com. And let's begin with our first topic, that is Nobel Prize in Medicine awarded for research on evolution. So first of all, this is the person, this man, this happy man here, he has been awarded Nobel Prize in Medicine. Nobel Prize in Medicine या Physiology जो हम बोलते हैं वो इनको दिया गया है. His name is Svante Pääbo. He is Swedish, Sweden के रहने वाले हैं. Svante Pääbo. First of all, let's see what are Nobel Prizes. Nobel Prizes होते क्या है and इतना हम इतनी बात क्यों करते हैं Nobel Prizes की. Every year we wait for Nobel Prizes, किसको दिया गया है and किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए दिया गया है. And UPSC also puts a lot of questions in prelims and mains around the discoveries या जो चीज़ें होती हैं नोबेल प्राइजेस, जिन कामों के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो द नोबेल प्राइजेस बेसिकली 5 ऐसे प्राइजेस हैं जो कि पिछले एक साल में कहते हैं कि अगर किसी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है 5 फील्ड्स में तो उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया जाता है. एंड but it has been seen in the past few years that not just in the past 1 year but अगर उससे पहले भी कुछ contribution रहा है mankind के लिए, किसी भी इंसान का या group of people का या किसी organization का. One person, one individual, a group of people, maximum 3 people and a group of organizations. So और सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है. नाउ नोबेल प्राइजेस जो हैं वो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की विल थी. अल्फ्रेड नोबेल इन्वेंटेड डायनामाइट. सो ही वांटेड टू लीव अ लेगेसी इन द वर्ल्ड. वो कुछ अच्छा करके जाना चाहते थे. डायनामाइट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग इन्वेंशन बट सिंस इट वाज यूज्ड फॉर वायलेंस, सो अल्फ्रेड नोबेल पब्लिक आई में इतना पॉजिटिव इमेज कैरी नहीं कर रहे थे उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में. सो ही डिसाइडेड, ही रोट इन हिज विल कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसको भी सेल किया जा सकता है, all that money coming from that property will be used to award people in 5 disciplines. What are those 5 disciplines? The first one is medicine or physiology. Medicine की growth, medicine industry की development या physiology की research हमारे existence के लिए, हमारे survival के लिए बहुत important है. Second is your literature. Third is your physics. Fourth is chemistry and fifth is peace. तो नोबेल प्राइजेस 5 फील्ड्स में दिए जाते हैं एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंडियंस ऑल्सो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है. दिस अवार्ड कैन नॉट बी अवॉर्डेड पोस्थमसली. किसी की डेथ हो जाने के बाद अगर उनका रिसर्च रिकॉग्नाइज हो जाता है कि उनका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट था, डेथ हो जाने के बाद उनको वो अवार्ड नहीं दिया जा सकता. सो लेट्स रीड आउट व्हाट वी हैव. दे वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901
अल्फ्रेड नोबल के नाम पर इनका नाम नोबल प्राइज रखा गया है. सो दीज आर अवॉर्डेड इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. कैरेक्टराइज्ड एज द पीस प्राइज, ये ऑस्लो में दिया जाता है. ऑल्सो जस्ट रिमेंबर देयर इज़ नो नोबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हमारे पास एक सबसे बड़ा अवार्ड है, दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड्स मेडल. Fields Medal is given for mathematics and it is awarded every 4 years. ये हर साल नहीं दिया जाता. Nobel Prizes annual basis पर दिए जाते हैं. They are awarded on an annual basis, while your Fields Medal is awarded once in 4 years to greatest mathematicians of that time जिनका कुछ बहुत अच्छा contribution रहा हो. There is another prize for economics. तो इकोनॉमिक्स के लिए जो भी नोबल प्राइज़ दिया जाता है दैट इज़ नॉट एक्चुअली अ रियल नोबल प्राइज़, बट जो स्वीडन का Sveriges Riksbank, that is the central bank of Sweden, जैसे हमारी कंट्री में RBI सेंट्रल बैंक है, so it looks after the economy of the country, वैसे ही जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उन्होंने एक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, तो उन्होंने ये प्राइज कॉन्स्टिट्यूट किया था इन 1968 and it is looked after it is administered after the Nobel Foundation. Nobel Foundation जो कि नोबल प्राइज़ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो ये जो इकोनॉमिक्स के लिए जो प्राइज़ दिया जाता है दैट इज़ नॉट एक्चुअली नोबल प्राइज़, जो कि 1901 से दिए जा रहे हैं, 1968 से दिया जा रहा है और स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने ये इंस्टीट्यूट किया था. ऑल्सो सो लेट्स गेट बैक कि इस बारी का इस ईयर का जो नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी दिया गया है वो किस लिए है. सो देर आर 2 स्पीशीज़, ह्यूमन बींग्स होम्योसेपियन स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं. हमारे आने से पहले हमारे कुछ एंसेस्टर्स थे जहाँ से हमें काफ़ी जीन्स मिले हैं. हमारा जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू डेनिसोवान्स और निएंडरथल्स, वहाँ से हमें कुछ फीचर्स मिले हैं. सो एज यू कैन सी द विनर ऑफ नोबल प्राइज़ Svante Pabo is holding a skull in his hand. तो actually जो Neanderthals and Denisovan है, for example if you see these skulls, this is the skull of modern human. ये हमारा जो आजकल के normal modern human beings हैं या homo sapiens हैं उनका skull है. जो Neanderthals का skull था वो थोड़ा सा backwards and इनका जो jaw था काफ़ी different था, and Denisovan का काफ़ी बड़ा head and jaw थोड़ा lower end पर था. So he has been able to decode the genetic makeup of Neanderthals. जो Neanderthals के हमें कुछ भी अवशेष बाकी मिले हैं, whatever remnants of Neanderthals we have been able to excavate from the earth or we have been able to find out in some caves, तो इनका DNA decode किया गया है इनके through. He has been able to decode the DNA of Neanderthals. Also he also discovered Denisovans, and जब DNA decode किया जाता है then what you can do is you can compare that DNA with DNA of present human beings. So it has been seen कि जो हमारा genetic makeup है, जो हमारे inherited characteristics हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन 2 species से derived है, Neanderthals और Denisovan. So this is a very breakthrough discovery that he has done. He invented a method to find out, because what happens now, अगर कोई स्पीशीज़ पूरी डाई आउट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल निएंडरथल्स एंड डेनिसोवान्स दे डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, तो अगर कोई स्पीशीज़ पूरी डाई आउट हो गई है उनका DNA बहुत इंटरफेयर हो जाता है. इवन इफ सम फॉसिल रिमेन्स आर रिमेनिंग, तो उनका DNA डीकोड करना, उसको DNA फिंगरप्रिंटिंग कैरी आउट करना है, DNA डीकोड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे सालों में DNA इन्फेक्ट हो जाता है और बैक्टीरिया फंजाई से इन्फेक्ट हो जाता है, और एंड DNA प्योर फॉर्म में नहीं रहता. सो ही वॉज able to find the genetic makeup of Neanderthals, due to which Neanderthals could be compared with modern human beings. Also the same case for Denisovan से हमारा relationship establish कर दिया गया. So now this as you can see, this upper part of or this lower part of Europe, this was the span of Neanderthals. East West realm बोलते हैं इस एरिया को. Neanderthals यहाँ रहते थे, and here इस पार्ट में डेनिसोवान्स रहते थे, इन द डेनिसोवा केव. UPSC हैज़ आस्क्ड अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स रिगार्डिंग डेनिसोवान्स. एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, एंड दे आस्क्ड व्हाट इज डेनिसोवान हैज़ बीन अ न्यूज़ एंड व्हाट इज इट रिलेटेड टू. सो इट इज़ एक केव होता था डेनिसोवान्स का, जहाँ पर डेनिसोवान्स के फॉसिल्स हमें मिले हैं, जहाँ पर डेनिसोवान्स के रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं. सो
Now we'll read out what we have here. So, through his pioneering research, Svante Pabo accomplished something seemingly impossible. क्योंकि DNA इतना पुराना हो जाता है, it was almost impossible to decode it. He sequenced the genome of Neanderthal, an extinct relative of present-day humans. He also made the sensational discovery of a previously unknown hominin. Hominin क्या होता है? जो कि हमारे ancestors मान सकते हैं, जो कि अब extinct हो गए हैं, या human या होमो सेपियन से काफ़ी रिजेंबलिंग स्पीशीज जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ही ऑल्सो मेड द सेंसेशन, तो इन्होंने डिस्कवर किया था प्रीवियसली अननोन होमिनिन डेनिसोवा. दैट्स व्हाई इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी ऑल्सो. Pabo has spearheaded the development of a new technique that allowed researchers to compare the genome of modern humans and that of other hominins, that are Neanderthals and Denisovans. So it has been seen through his researches कि काफ़ी जो जीन्स थे वो हम नियांडरथल्स और डेनिसोवान से अभी भी कैरी करते हैं. काफ़ी आपके ऐसे जीन्स थे जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो सम ऑफ देम हैव बीन रिटेन, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन गिवन अप ऑन, बिकॉज जहाँ पर नियांडरथल्स और डेनिसोवान्स पहले रहते थे, दे हैड टू माइग्रेट ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस टू मेनी एरियाज. तो अभी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, दीज वर नॉट द एक्चुअल ह्यूमन सेटलमेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. So earlier what we had was Neanderthals and Denisovans. This transfer of genes between hominin species affects how the immune system of modern humans reacts to infections such as the coronavirus. People who are outside Africa have 1 to 2% of Neanderthal genes. So he and his team managed to extract DNA from a tiny finger bone found in a cave in Siberia. So that was, you know, a very exceptional thing to do. Whatever sequencing was being done of the entire genome of Neanderthals, it is being also described as a sensational discovery for the same reason. These are basically sister groups. हमें पहले नहीं पता था कि Neanderthals and Denisovans could be related. So now it has been established by his research that Neanderthals and Denisovans were actually sister groups which separated from each other around 6 lakh years ago. So you know, जब हमें अपना genetic makeup पता लगता है and we understand that what was the genetic makeup of our ancestors, तो हम बहुत अच्छे से बता पाते हैं कि एंड बहुत अच्छे से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किस इन्फेक्शन को या किस टाइप के पैथोजन को हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, बिकॉज ऑफ द इंटायर स्टडी ऑफ द जेनेटिक मेकअप और द जीनोम सीक्वेंसिंग दैट हैज़ बीन कैरिड आउट ऑफ आवर DNA. सो अगेन दिस इज द पिक्चर. यस, सो फ्रॉम हियर दे माइग्रेटेड. जो ये डेनिसोवा जो आपको पिंक या रेड में दिख रहे होंगे, फ्रॉम हियर दे माइग्रेटेड. इस जो लाइन जहाँ पर इनका स्पैन था ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में, दे माइग्रेटेड फ्रॉम हियर एंड सम पीपल दे स्टिल कैरी देयर जीन्स फॉर immunity and for their survival. So this was about Nobel Prize in Physiology. Now you know, ऐसी discoveries हमें बहुत ज़्यादा benefit कर सकती हैं in fighting diseases in the coming years. Understanding genetic makeup, understanding our ancestors, वो हमें actual capabilities human body की बता सकती है, या actual type of infections our body can fight with. So this is as the headline reads that this year's Nobel Prize has been awarded for history of evolution, awarded for research on evolution, because after the pandemic it was seen that studying evolution of human beings is very important. Then we'll be able to study that for how long can you Homo sapiens stay on earth, and what are the circumstances under which we have a threat to our life, just like the COVID-19 pandemic. So let's move on to the next part. So this is a headline from Down to Earth. It reads that 60 years after they were last seen, tigers to come back to Madhya Pradesh's Madhav National Park. See, human-animal conflict and poaching of wild animals, that is very rampant. Poaching has been controlled to a very good extent thanks to Project Tiger. The population of tigers in the country is also increasing, but there is a national park called Madhav National Park. Madhya Pradesh is known for its tigers. उसमें बहुत सारे tiger reserves हैं, but Madhav National Park में कोई भी tiger नहीं था. Let's look at the location of Madhav National Park first. So as you can see here, this area is adjoining Rajasthan. It is located at top of Madhya Pradesh, and these are like
अदर नेशनल पार्क्स जिनमें टाइगर रिजर्व्स भी आते हैं और बहुत सारे टाइगर्स की पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में है. So now it has been seen that five tigers will be brought to Madhav National Park. They will be relocated to Madhav National Park. Now the catch here is कि जो 5 tigers लाए जा रहे हैं इस national park में, they are not coming from the same source. वो same जगह से नहीं आ रहे, same national park या same tiger reserve से नहीं आ रहे. Now what is the reason? The reason is inbreeding. You know, tigers could be brothers, sisters. So if inbreeding of tigers happens, for example, 5 tigers are brought to Madhav National Park. So since there are no other tigers, inbreeding might happen. And inbreeding की वजह से क्या problem होती है? Inbreeding leads to a lot of diseases. So disease control करना मुश्किल हो जाता है. Sometimes genetic diseases का भी जो जो suppressed genes होते हैं, जिन्होंने actually genetic disease suppress किया हुआ था, that might come up as a dominant gene if inbreeding happens. So ये जो सारे tigers हैं, mostly they are being brought up from different national parks. So tigers will come back to this national park after 60 years. So let's see where are they coming from. So these tigers will be brought from Panna, Bandhavgarh and Satpura national parks. As I told you, 3 national parks से ला रहे हैं. The reason is very clear. To the MNP or Madhav National Park of Shivpuri, which is located in Madhya Pradesh. This is to ensure genetic diversity. Genetic diversity से immunity better होती है. The fighting capabilities or the hunting capabilities of these prey animals, they really go up when there is genetic diversity. And if the need arises, we will move more individuals from forests near Bhopal, where sightings of tigers are very frequent. This was the statement of Principal Chief Conservator of Forest of Madhya Pradesh, as he told down to earth journalist. So right now, sir, 5 tigers relocate किए जा रहे हैं. Let's talk about Madhav National Park and let's talk that why relocation is necessary. See, we say it has been told by wildlife experts that around 29% of tiger population that is present in India is actually outside protected reserves. तो आपके national parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves जो भी हैं, उनसे बाहर कुछ population रह रही है. That is 29% of the population that is outside these protected areas. The first fact is this. Second fact is that there is a lot of human-animal conflict going on in areas या protected areas जहाँ पे density of tigers is going high. Obviously, on the one hand, the population of tigers is increasing. If you remember, like around 2006, बहुत एक ad आती थी television पर कि सिर्फ 1411 tigers बच गए इंडिया में. Tiger is the national, so just 1411 tigers are left in the country. This was an ad circulating on our TV channels back in 2006 and 7. From there on, we signed the St. Petersburg Declaration. St. Petersburg Declaration was the T20 Declaration. Now T20 is not associated with your cricket, it was associated with tigers, that in the next 20 years all the signing parties must double the population of tigers that is present in their various countries. So we achieved this doubling of population. As of now, we have 2967 tigers available in India, that is close to 3000. हमारे पास almost 3000 tigers हैं इंडिया में all over the country which are spread. So that this target has been achieved well in advance from our stipulated targeted date. So thanks to Project Tiger, thanks to the efforts of NTCA, National Wildlife Conservation Board, that the population of tigers has gone up. But human animal conflict ज़्यादा हो गया है. जो tigers exist करते हैं उनके लिए ecosystem सही नहीं है. They do not have a lot of prey base in some of the areas in the country. So since Madhav National Park is already a protected area, it was better judged to be able to host new tigers. तो कुछ tigers इधर relocate किए गए हैं. And relocation is a very expensive activity. Crores of rupees go around in relocation of tigers, because relocation से क्या होता है, कोई भी अगर species अपने पुराने natural reserve में रह रही थी, अपने tiger reserve में रह रही थी कोई भी species, it was happy there, it knew like where to go, where to hunt, things like that. जब उसको travel करवा कर एक नई जगह transport किया जाता है, relocate किया जाता है, there are chances that some
some pathogens in the environment might cause a disease to that new species that has been introduced. यहाँ उनको hunting करना ना आए या उनको जो environment है वो comfortable ना लगे hunting के लिए, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है. You have to look at the grasslands also कि grasslands या forest areas properly available है and tigers can comfortably survive there and comfortably breeding can also be carried out. They can also breed. तभी वहाँ पर जो population है वो increase हो पाती है. So this is one of the efforts. In fact, around 2 years back, the first relocation project of relocation program of for tigers was carried out, and that failed. The tigers could not survive. They had to be taken back from the point to the point of origination. They could not survive. Yeah, they turned very wild and very violent in the new environment, new atmosphere. So Madhav National Park, again, this is a very expensive project, and let's see how the result would be in times to come. Let's keep our fingers crossed. This national park is situated in Shivpuri town in Madhya Pradesh and is at the upper part of Vindhyan Hills. So Vindhyan Hills basically divide your northern India and southern India into two parts. So Vindhyan Hills horizontally pass करती हैं. So it comes in upper part of Vindhyan Hills. This was earlier the hunting ground of Mughal emperors and Maharaja of Gwalior. Got the status of national park in 1958 and there is a diverse ecosystem that it has been gifted with. वहाँ पर चिंकाल है, jackal है, fox है. There is deer is there, sambar is there, so that you know some of these animals, they are a good hunting base for tigers. So food is properly available. ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब यही है कि प्रॉपर एनवायरनमेंट इज अवेलेबल. ऑल्सो देर आर अदर स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम द डियर विच इज़ योर प्रे एंड द टाइगर विच इज़ एक्चुअली हंटिंग ऑन द प्रे. बहुत सारी और स्पीशीज होती हैं जो कि इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं. दीज स्पीशीज आर योर स्पीशीज लाइक जैकल एंड फॉक्स. So these are also present there, and that's why this project is very important for the country for increasing the population of tigers in the country and for their adequate protection. Now the next one and the most interesting one is, you know, Chikmagaluru hill stations in the hues of purple and blue. So if you can look at the picture, if you can see the picture clearly, these are flowers of purple and blue color. इनको हम नीला कुरुंजी flowers बोलते हैं. These are known as नील कुरुंजी flowers. And these flowers, the special part about these flowers is that they bloom after 12 years. ये 12 साल के बाद ही bloom करते हैं, एक ही बार bloom करते हैं, उससे पहले bloom नहीं करते. In fact, इन्हीं flowers के नाम पर नीलगिरी hills का नाम पड़ा है. नीलगिरी hills are named after नीला कुरुंजी flowers. So they have turned the green patches of Baba Budangiri range of Western Ghats into purple and blue. It is a shrub. Neela Kurunji is a shrub that famously blooms every 12 years. So again, very important species, कुछ important plants की, कुछ important animals की study करना हमारे exam के लिए बहुत important है, especially the location. This is not found all over India. It is found in Western Ghats or your Nilgiri hills. It is endemic to Western Ghats, covering the slopes of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. So only 3 states are there where these flowers are found, and only 3 states where these flowers bloom. So it is a genus of about 350 species of flowering plants in the family of Acanthaceae, mostly native to tropical Asia and Madagascar. So thanks to the location of India that we host these flowers in the country also. They are seen mostly on Nilgiri hills, which even got its name from the flowers. Neel means blue and Kurunji referring to the flowers. So yes, we've reached to the end of our presentation. The PDF for this lecture, for this discussion would be available on our Telegram channel shortly. Download it from there, read out these current affairs. The rest of the current affairs regarding Nobel Prizes will be taken next week in our Wednesday discussion again. All the best. Very happy Dussehra to all of you again. Also, if there are any doubts, as this is a recorded lecture, let us know in the comment section. Our team will happily respond back to your doubts in the comment section below. I'll see you next week and today at 9 PM in Seize the Mates.